हेलो फोक्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके पढ़ेंगे इन डिटेल, जैसे कि हो गया हमारा कंप्रेस्ड फाइल्स, या फिर नहीं तो आईएसओ इमेजेस, या फिर नहीं तो एचटीएमएल फाइल्स। ठीक है, उन सभी को लेकर एक कंजुगेटिव एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो तो प्लीज़ डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एज सुन एज पॉसिबल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, तो पिछला वीडियो में खास करके हम डिस्कस किए थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग अटेम्प्ट्स कैसे होता है। ऑल्सो वी हैव कवर्ड सम ऑफ द क्रूशियल पॉइंट्स एंड like uh, like I even say, let's just giving you a brief summary about what are the discussion we have taken. So what kind of threat actor basically in 2021 and 2022 graph also we have seen, as phishing is one of the main attempts, or phishing is one of the most cyber attack. Okay, so which basically threat actor basically performs because the initial access been easily been available, the initial access can be easily been propagated, or the initial access can easily occur. Okay, just with common mistake basically do by the targeted host. Okay, so those all things we have already covered, okay, in the analysis part, or you can say in the previous concepts. So if you haven't gone through that, just I recommend you to please check it out. Okay, now in this video we'll be having, और ठीक है, इस वीडियो में क्लास करके हम डिस्कस करेंगे compressed files. ठीक है, let me take my cursor to explain you in detail. ठीक है, जैसे कि हमारा कंप्रेस्ड फाइल्स हो गया, जैसे कि कंप्रेस्ड फाइल जैसे कि हम मान सकते हैं डॉट आर ए आर, या फिर नहीं तो डॉट जेड एक्स, या फिर नहीं तो जिप एक्सेट्रा, ये सब कुछ कंप्रेस्ड फाइल है। जब भी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ malicious आईपीस या फिर स्पेसिफिक सेट ऑफ malicious मेल्स यूजुअली आता है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ स्नूफिंग। ठीक है, ईमेल स्नूफिंग। ठीक है, तो ईमेल स्नूफिंग या फिर फिशिंग अटैक्स या फिर कोई भी, ठीक है, तो इसमें जो कि सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स या फिर टेक्निक्स या फिर प्रोसीजर्स बेसिकली यूज होता है, राइट। तो उस फाइल जब हम डाउनलोड करते हैं, या फिर एक मलिशियस या फिर मालवेयर बेसिकली हो जाता है एग्जीक्यूट, ओके, हमारा सिस्टम में, तो ए होता है ट्रिकिंग देम टू एक्सट्रैक्ट इट एंड एग्जीक्यूट द एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, सो ए हो गया हमारा कंप्रेस्ड फाइल। उसके बाद आईएसओ इमेजेस या फिर एचटीएमएल फाइल्स सिमिलरली, जैसे कि हो गया, मैं आपको एक डिस्प्ले रखा हूँ, ठीक है, पिछला वीडियो में भी अंत में बोल दिया हूँ कि एचटीएमएल फिशिंग अटैचमेंट, जैसे कि हम जब भी हम इस पिक्चर को देखते हैं, वी एक्चुअली ट्रीट इट एज legitimate site and we enter our credential and password, but we haven't look after the URL which is basically targeting that, or which we are visiting into. Okay, so this URL, if you if you start checking in the different threat intel portals, you will be getting an idea about what the threat score is, how the items are been taking place. Okay, so this is how in an attacker basically performs the HTML file operations, or we can say in a very simple definition, if I start saying, an attacker may send an HTML phishing attachment, okay, so that basically impersonate familiar login pages, okay, such as we can say the Microsoft login page or the DHL login page, okay, or blank login page to harvest victim's credential. Okay, so this is how actually the performance of HTML file basically occurs. Okay, so we have discussed these things in this. So coming to next, about spear phishing links. Okay, spear phishing links and phishing links types. Okay, we also will be having, ठीक है, हम spear phishing links, उसके साथ साथ फिशिंग लिंक्स क्या क्या है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके, तो स्पीयर फिशिंग लिंक्स बेसिकली क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स एडवर्सरीज, ठीक है, अटैकर्स, ओके, सेंडिंग स्पीयर फिशिंग मेल्स। ठीक है, सो स्पीयर फिशिंग इज जस्ट अबाउट सेंडिंग malicious mail or malicious mail with attachments, okay, to gain unauthorized access and to fetch sensitive information, sensitive data. Okay, so targeted victims with malicious links to either harvest their credential or trick them into downloading malware or execute it into the machine. Okay, so thus gaining initial access to their system. As with all the mail threads, after defining a list of victims email,
addresses, and also preparing the phishing links. Okay, the attacker is ready to send an email to the victims, but what actually here happened is that what is the attacker's purpose in sending the spear phishing links? Let us discuss the two most common type of phishing links used by the attacker. ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि spear phishing एक फिशिंग अटेम्प्ट्स है जो कि लिंक्स भेजते हैं, फाइल्स भेजते हैं, अटैचमेंट्स भेजते हैं, एक कंप्रेस्ड जिप फोल्डर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो भी हम बोलते हैं, राइट, उसको भेजते हैं, जिसके अंतर्गत जब भी एक टारगेटेड होस्ट, ठीक है, डाउनलोड करने लगता है तो डेफिनेटली वो बेट बन जाता है, अपना क्रेडेंशियल सब कुछ खो देता है, राइट। उसके हिसाब से अगर माने तो द अटैकर जो कि द एडवर्सरीज जो बोलते हैं, राइट, सो दे एक्चुअली फेच ऑल द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और गेन द इंफॉर्मेशन। ओके, सो टू डिस्कस इन डेप्थ, ठीक है, और उसका पर्पस क्या क्या है। Okay, so for getting a deeper dive into this concept, so let us discuss about the two most common types of phishing links, okay, basically being used by the attacker. So one phishing links types and phishing links types. So as we discussed before, okay, every adversary has different intention, okay, every adversaries or threat actors has different intention. So जैसे कि हो गया हमारा some just want to harvest credential, कोई कोई क्रेडेंशियल हार्वेस्ट करने लगता है, या फिर क्रेडेंशियल लॉगिन या फिर क्रेडेंशियल पासवर्ड गेन करने लगता है, पासवर्ड स्प्रे करने लगता है, और किसी किसी का इंटेंशन इनिशियल फुटहोल्ड रख के, ठीक है, एज अ वाइड्स एज अ स्पीयर फिशिंग अटैचमेंट देयर वेरियस malware malicious links types that attacker use to mail to targeted victims. Okay, so the following are two common example of phishing links. क्या क्या एग्जांपल्स है? पहला है a phishing link to harvest credential, और एक है फिशिंग लिंक टू डाउनलोड मालवेयर। ये दोनों हमको मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिशिंग लिंक्स भी हम मान सकते हैं फोक्स। पहला हो गया हार्वेस्ट करने के लिए क्रेडेंशियल, दूसरा हो गया मालवेयर या फिर डाउनलोड करने के लिए। तो मालवेयर में बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर, लाइक रैंसमवेयर, रूट किट, फाइललेस मालवेयर, और एडवेयर, स्पाईवेयर, worm, okay, mobile malware, okay, then after we have also mal spam, okay, so keylogger, okay, also we have discussed botnet, okay, so ये सब कुछ बेसिकली मालवेयर फैमिली हो गया, उसका टाइप्स हो गया। तो कोई भी मालवेयर हो सकता है फोक्स, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे क्रेडेंशियल हार्वेस्ट और हार्वेस्ट ऑफ क्रेडेंशियल। सो फिशिंग लिंक्स के दौरान या फिर हाउ द adversary basically uses phishing links to harvest credential. So one of the form of credential harvest attack, okay, is when the attacker send a phishing email, okay, armed with a link to a bogus website to trick a user into entering their credential. Okay, so here what actually happened is that to host their phishing page, an attacker may use their own domains or abuse the legitimate web application, okay, which basically started hosting in the domain, such as we can say appspot.com, or even we can say app or web app domain. So these were the two hosted domains, okay. Also the also like I can say like what the freely available domains which are available by WordPress, right? So those were the freely available domain, okay, as we will see, okay, as we will see later in the attacker techniques to avoid email security detection, okay। So section in 2014 एक्चुअली में क्या हो गया, केस स्टडी भी मान सकते हैं, केस स्टडी भी दर्शाया गया है कि 2014 में क्या हो गया कि 2014 an American multinational financial service company fell into victim of cyber attack, okay। इसमें क्या हो गया कि हम let us discuss, okay। The attacker started when attacker sent phishing email to employee that contains a link to a fake website, ठीक है। इसमें आता है स्नूफिंग, ओके, रिसेंबलिंग द कंपनीज वीपीएन लॉगिन पेज, ठीक है, कंपनीज का वीपीएन लॉगिन पेज को बेसिकली टारगेट करता है। उसमें क्या हो गया, द एम्प्लॉय वेर स्ट्रिक्ट इनटू एंटरिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल, ठीक है, वीपीएन लॉगिन क्रेडेंशियल ऑलरेडी एंटर कर चुका है। तो
which were then harvested by the attacker. ठीक है. So with access to the company's network, basically क्या हुआ कि the attacker were able to steal data on more than 75 million household and 7 million small businesses. ठीक है. वो हो गया credential. जैसे कि credential अपना यूज करके VPN लॉगिन करने लगा, तो basically the employee was sticking into their credential, right? So which were then harvested by the attacker, then after with the access to the company's network. Okay, so the attacker were able to steal the data. Okay, so this is how actually the scenario of harvest of credential basically comes into role. Then after a phishing link to download malware. तो इसमें कैसे फिशिंग लिंक्स कैसे बेसिकली यूज होता है डाउनलोड मालवेयर डाउनलोड करने के लिए. तो इसमें ये दर्शाया गया है कि एन अटैकर में होस्ट द मालवेयर. ओके, एन अटैकर क्या करता है, मालवेयर को होस्ट करने लगता है ऑन देयर वेब सर्वर और वेल नोन लेजिटिमेट क्लाउड फाइल के होस्टिंग सर्विसेज सच एज मेगा, वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म में है, राइट. सो एंड देन सेट द फाइल, ओके, लिंक्स एंड victims the email and trying to डाउनलोड एंड एग्जीक्यूट malicious फाइल. तो इसका केस स्टडी भी इसमें दिया गया है कि 2017 में क्या हुआ कि एक ग्लोबल लॉ फार्म, ओके, वेल victim into massive cyber attack that uses phishing email to deliver malware. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ कि the attacker started when the employee receives a mail that appears to be from a client. ठीक है, legitimate जो कि स्नूफिंग रहता है, राइट, ईमेल स्नूफिंग. Okay, so with a subject line referring to a real estate matter. Okay, तो इसमें क्या हुआ कि the email contained a link that employees clicked on, okay, which then downloaded email onto the firm's network. Okay, उसके बाद ये हुआ कि the malware quickly spreaded throughout the firm, okay, global network, infecting system and encrypting the files. ओके, जब मालवेयर डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है एप्लीकेशन में या फिर क्लाइंट्स का डिवाइस में, क्लाइंट का होस्ट में, तो डेफिनेटली वो एक्चुअली सेंसिटिव डाटा को फेच करने लगेगा, एनक्रिप्ट करने लगेगा, हार्वेस्ट करने लगेगा. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि द थ्रेट एक्टर स्टार्टेड gaining the initial access of the system and basically here uh, all sort of information, all sort of data will be leaked out, right? So that's how actually the things happened in this. Okay, so the attackers demanded to a ransom payment, okay, in exchange of decrypting a key. So it's all about ransomware attack. ठीक है, तो इसमें ransomware अटैक हुआ है जो कि वन ऑफ द फैमिली ऑफ मालवेयर. तो जब तक आप नहीं लोगे वो अमाउंट जो कि नहीं दोगे, राइट, इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टोग्राफी, राइट, they are not going to give you the decrypted key. So every data will be encrypted, every data will be encrypted unless and until you give a payment in exchange for decryption key. ओके, सो इन इसमें डिक्रिप्शन एंड एनक्रिप्शन आपको ध्यान में रखना चाहिए फोक्स. व्हाट इज इंक्रिप्शन, व्हाट इज डिक्रिप्शन, व्हाट इज सिमेंटिक. ओके, जैसे कि हो गया प्राइवेट की, पब्लिक की. ओके, तो प्राइवेट की किसमें यूज होता है, एसिमेट्रिक. ओके, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन. तो किसमें पब्लिक की होता है, किसमें प्राइवेट की यूज होता है, कौन मतलब which one is more advantage or which basically takes less time, which takes more time, okay, which is more secure. So those all things basically covered in the encryption decryption is in one of my videos. Please refer that, you'll be getting an idea, folks. Okay, so here the attacker caused a significant disruption to the prime operation, okay, and it took several weeks to fully recover. Okay, so this is what actually happened. Okay, so happened in where, so it is actually happened in 2017. Okay, so let me take my highlighter pen. Yeah, great. So this is we have discussed about what we have discussed about phishing link to harvest credential, and also we have discussed about phishing links to download malware. So these were the two things which we have discussed in this video session. Okay, so moving to next, black blackmail mails. So what sort of blackmail mails are being, or what kind of things are happening in this. Okay, so is also known as what, an
Okay, so just read it out, folks. Okay, so a blackmail mail is also known as this Trojan mail. Okay, so it is a term. Okay, it is used as a term to describe an email, okay, scam where an attacker claims to have compromised the victim's machine and exfiltrate sensitive data. Okay, so जैसे कि हो गया including these all things. Okay, explicit things which are not even necessary. Okay, so attacker demands the payment in the form of bitcoins and treated the publish in public. Okay, so definitely they will give that, right, because it is basically content those contents which are not even legitimate, right? So this is how actually blackmail mail basically poses. Then after, methods to prove infection. So what sort of methods, okay, so that we can prove for this kind of infection? What are the different methods to prove the infection? क्या क्या methods है? जैसे कि proving a data breach to the victims may simply or seem simple if the attacker has acquired actual sensitive data. जैसे कि हो गया these contents or picture confidential. How these are many cases. Attacker may not access the valuable data of the compromised victims and machines at the all simple attempts and scam the victims. There are two common methods the attacker basically use. Okay, what are the two common methods? पहला कौन सा है? Screenshot of the breach data or from victim's machine, snooping the targeted victim's email address. Okay, so ये दोनों basically होता है, folks. और जैसे कि हो गया two forms or two methods that attacker uses to convince victims. Screenshot. The blackmailer may compromise the victim's data by either deploying malware on the machine, such as infostealer malware, ठीक है, or by purchasing the victim's data from data leakage storage, जैसे कि हो गया dark web. Okay, so in both cases, the attacker may usually obtain screenshots. Then after snooping the targeted victim's email. So in many cases, basically क्या होता है कि the blackmailer is simply a scammer. Okay, एक scammer भी हो सकता है and never had access to either the victim's mission or even we can say data. Okay, so in such situation में क्या होता है कि the blackmailer uses the mail snooping techniques. Okay, mail snooping techniques to trick the victims into thinking that this machine has been compromised by the blackmailer. Okay, तो इसमें basically क्या होता है कि the email spoofing techniques, okay, is a technique used to use in the mail attack to trick the recipient into thinking that message came from the email sender other than the actual sender. Okay, so in that case of blackmail, the attacker usually snooze the victim's email address itself to send the blackmail email to the victim to trick them into thinking that they are compromised. Okay, so and the attacker uses their email address and send them this to the blackmail. Okay, so this is how actually the snooping target basically occurs. Email snooping techniques. Okay, it forms to be legitimate but it is not legitimate, right? So here everything comes into role. Okay, सो देन आफ्टर बिजनेस ईमेल कंप्रोमाइज, जैसे कि हम बोल सकते हैं BEC. तो बिजनेस ईमेल कंप्रोमाइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हमारा पिछला वीडियो में, फोक्स. एंड इसमें एक केस स्टडी भी हम पढ़ाई करेंगे इस वीडियो में खास करके. सो विल बी कवरिंग द थिंग्स इन डिटेल. तो BEC is all about business email compromise. Is a type of email scam. Okay, where the attacker targets a specific individual. Okay, एक specific set of individual को basically target करता है. Okay, within a company also has access to the financial information. जैसे कि such as executive or finance employee, and tricks them into making a frauded financial transaction or wire transfer. BC attack, okay, often involves the email threat hijacking techniques, okay, which will basically been discussed, okay, in the social engineering tactics method or tricks. Okay, or snooping the email addresses to the trusted partner or company executive to convince the victims to transfer money or sensitive information. So this is all about business email compromise. Okay, I will not be taking much of your time, folks. It is already been 20 minutes of this session, so you will be getting bored about this all concept. So let us discuss about this concept, okay, in our upcoming video about what actually BEC is and how actually it works. And also we will be having certain discussion regarding the phishing attempts,
okay, or links, okay, which we have already discussed. A short summary I can even say. Okay, so till then, thanks for giving your precious time for this, folks. Thanks a lot.